Dear learners, sorry for delay. So I welcome all to today's session. So today MSOE for the last class. So I welcome to Dr. Prafulla K Jena. He is a very senior most academic counselor. Out of his busy schedule, he is accepted our invitation and is getting all pain. He deliver the lecture to all of you. So no doubt, after all efforts, the student is not joining which way it should be joined anyway, because they are not might be thinking you are giving in the YouTube channel, so might be they will go through with that. So due to this pandemic, all are locked down and shut down in the home. In this critical juncture, you have to stay safe, stay home. So true sense, the digital learning and distance education going to success to reaching to the learner's doorsteps. So in true sense, IGNOU is now reaching to your doorstep through this Google Meet. So with these words, once again I welcome to Dr. Jena. So I hand over the session to Dr. Jena. Thank you, sir, for your introduction. Uh, Welcome to learners. So today is the last class. So if any doubts, any questions, if there is, must be maybe asked in the last. So we'll give a 5 or 10 minutes to discuss about any doubts that is discussed in the last classes. So today is the last class, and we also deal with the block 8. That is also the last unit of this MSOE 4. That is urban sociology. So let us begin with this urban governance. Urban governance. So local in urban governance, we will discuss about the role of different governmental agencies involved in urban governance. So we'll discuss in the first unit of this block 8, that is local self-government and emergence of voluntary organizations. Local self-government. So you know that in local self-government, particularly it refers to the urban local self-government. Urban local self-government. It is this unit. The importance of the urban local government in India has considerably increased in post-independent era. Because prior to independence, there are very number of towns are very less. The level of urbanization was also very low. The population, urban population was also very low. So, but this after independence, it has increased. The urban population increased. The number of urban cities come into existence. For this reason, the importance of the urban local government in India has considerably increased in the post-independent era, and particularly with the inauguration of the Constitution, embodying the principle of democracy and a welfare state, emphasizing upon the governments in urban areas to promote social and economic development. So government should promote social and economic development. Government should promote social and economic development. So how? That's why it is very important and pertinent to know what is local self-government and what are its, how it is evolved, how it emerged. So, what is local self-government? We must know what is local self-government. So, different scholars have defined local self-government in different ways. So, according to P. Stone, who defined local government as a local government is that part of the government of a country which deals with the people of a particular locality. So local government is a part of the government of a country.
यह गोटे देशर सरकार एक अंश एंड इट पर्टिकुलरली एवं निर्दिष्ट भाव यह एक गोटे लोकालिटी गोटे अंचल सहित जड़ित so that means in other words local government कहले government of the locality or that is local government. So but encyclopedia Britannica says so local government refers to an authority to determine and exercise measures within a restricted area inside and smaller than the whole state. So another definition, local government कहले the local government is the administration of a locality, a village, a city, or any smaller area in a state. So local government is the administration of a locality, a village, a city, or any other smaller area in a state. So Golding, according to L. Golding's opines that local government is the management of their own affairs by the people of a locality. When people of a locality manage their own affair themselves, we call it a local government. So local government is a government of the locality or a particular area and which is managed by the people themselves. So that is what we mean by so local government may be said to involve the concession of a territorial or non-sovereign community legal rights over organization to regulate its own affairs. So a particular when a local area has the sovereignty to regulate its own affair. So when he has the capacity, he has the freedom to regulate his own affair within a particular locality, you can say it as a local government. So local government, this local self-government or global government, or we can say urban local bodies. So its definition is differ from respective countries or respective states. So it is a well-defined area. Local area is one of the important characteristics of local self-government. Because local government, it means government of the locality. So at the locality or a specific area, so that's why local area is one of the primary characteristics of a local self-government. गुरुत्वपूर्ण लक्षण कहीं एरिया बिना लोकल गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माने जेतु लोकल को बुझौछि तनु एटा गोटे लोकल एरिया को अंतर्गत करबो इट नेचुरली इंक्लूड ए पर्टिकुलर लोकल एरिया सो लोकल एरिया मींस ए फिक्स्ड area that is decided by the state government and this can be termed as a village, a town or a city. So similarly, second, that is local authority. The second characteristic of local self-government is local authority. And by local authority we mean the administration of a particular locality. So it refers to the that this administration of this local area is run by authority or a group of persons which directly elected, who are elected by the people directly in that particular area. Or in other words, you can say it is the people, it is the local people who elected a body or a group of people to exercise authority over them. So that's why local authority refers to the authority of these people who are elected by the local people of that area. So then the third characteristic is civic amenities for local inhabitants. So civic amenities. So all civic amenities must be provided in the local self-government. It is the duty of this local self-government to provide the civic amenities to the people of the locality, those who are living, or the inhabitants of the locality. So that's why the inhabitants of that locality
the primary objective of this local government is to provide these amenities to the people at their doorstep. And people who are living in this area must have the necessity, necessity to fill their requirement, and their requirements should be filled up by the local government. Then finance. Finance is also necessary for any government, because without a kind of certain finance or amount of finance, no local government can run itself. So that's why finance is also an important characteristic of a local self-government. Without finance, no self-government can run. So any developmental works, to be performed in that area, requires some sort of finance. So that's why finance is also one of the important characteristics of a local government, because without finance, no local self-government can maintain itself, or nor it can do any developmental work for the people of the locality. So that's why finance is an important characteristics of local self-government. We're discussing with the characteristics of local self-government or urban self-government. So then local autonomy. So local autonomy is also one of the characteristics of local self-government, that it means the freedom of the local bodies in discharging their duties. So local bodies must enjoy all sorts of freedom to discharge their duties for the inhabitants of that area. So that is what is required for the local self-government. Then local participation. Another characteristic of local self-government is local people's participation. So people of that locality, of the local self-government, must participate in the government, in the governance, process of governance, because the participation will make the governance more effective. Unless people ventilate their grievances to the authority, then authority can take necessary steps to fill up their different kinds of needs. So that's why it is the people must participate. A mere participation is not sufficient. The people must participate effectively in the local government, so that the government can take necessary steps to fill all the necessities of the local people. So participation, local participation, not mere participation, but an effective participation is necessary for the effective governance of the local self-government. Then another is leadership. There must be leadership in the local self-government. The leadership must be effective, because success of a government depends on the leadership quality and effectiveness. If the local leaders, those who lead the local self-government, are effective and has the capacity to fulfill all kinds of needs of the locality as well as the local people and the local area, then the leadership then will be praiseworthy. So that's why effective leadership is required for the local self-government. So these are the another important characteristic of local self-government. Then local development. So local development must receive top priority in the local self-government. It is not only the authority, but also the local leader who prioritize their developments, and people should ventilate this to the leaders, and leaders should ventilate to the local authority to fulfill their development. So development means all-round development of all people and all areas. So local area, a complete development of the local area, not a lopsided development. Rather, a holistic development must be carried out by the authority of the local self-government. Then accountability. There must be accountability of the local authority as well as the leaders to the people. So people and the local authority as well as the leadership must be accountable to the people, directly accountable to the local people, because it is the people who elect them. It is the people whose price these authorities are there to serve the local people. So that's why it is important that people must have, the authority must have accountability for the people.
So these are the characteristics of local self-government. So these are repeat another once again the characteristics. There may be local area, local authority, local civic amenities, local finance, local autonomy, local participation, leadership, and development and accountability. These are the features of the local self-government. Then come to the next, that is distinction between local government and local self-government. Local government and local self-government, that is a minor difference. So local government, local self-government are interchangeably used. There is no basically difference, but it is interchangeably used. But the term local self-government is used in those countries which were under the colonial rule. Self-government आमर basically प्राक स्वाधीनता समय व्यवहार होता है self-government. जेतु सेतबेले colonial ruler थे, some other were our ruler. So that's why they use for the purpose their local self-government. Self-serve करना से भी use होगा. But basically this mean to something. या एका कथा को बुझाए, there is no basic difference between that. Basic difference नहीं. बस लोग use in colonial rule रे केवल local self-government कथा का use होगा. After India got its independence, it is used only the local government. We use the term only local government have used after independence. Only local government concept was used instead of local self-government. However, the term local government instead of local self-government used in entry 5 of list of the 7th schedule of our constitution. Our constitution mentions it, not that we automatically use this term local government. So instead of local self-government, we use local government because of the constitutional directives that is enlisted in the list 5 of the 7th schedule of our constitution. However, in spite of this deletion of the word self, but very often we use the term local self-government or local self-government interchangeably, meaning the same, So, however, the term signifies a government representative, a local inhabitant more or less autonomous in character, instituted under state legislation in a village, in a district, or in a urban area to administer services as a distinguished from state to central services. So local self-government कहले कौन? Local self-government means it refers to a government. Local self-government को दे सरकार को refers to a government, the representative in local representative of local inhabitant. जो सरकार की लोकल अधिवासी स्थानीय अधिवासी मानकर रिप्रेजेंटेटिव स्थानीय अधिवासी मानकर रिप्रेजेंटेटिव मोर और लेस ऑटोनोमस एवं सेमानकर ऑटोनॉमी अछि एवं से लोक ऑटोनॉमी थिबो एंड इंस्टीट्यूटेड अंडर स्टेट लेजिस्लेशन एवं से लोकालिटी ता एक स्टेट लेजिस्लेशन राज्य विधेयक द्वारा युक्त हेतिबो कोडी ना गोटे ग्राम गोटे जिला कि गोटे शहर गोटे अर्बन एरिया कौन पाई टू एडमिनिस्टर सर्विस प्रशासन एडमिनिस्टर करिया पाई बा सेवा जोगेया पाई ए करा जाउतबा ए प्रक्रिया को हमें सेल्फ गवर्नमेंट बोली करता है. So the urban local government is that part of the local government which deals exclusively with the urban affairs. So urban local government होची local government रा पूरा part. It is a part of that local government. Urban government is a part of that local government which deals exclusively with the urban affairs. जाकि संपूर्ण exclusively का संपूर्ण भावे urban affairs सहित जड़ित. So there is a little distinction between local government and local self-government. However, and the functions, the local self-government function as a school for democracy, wherein citizens are imparted political and popular education regarding issues of local and national importance. So this local self-government act as a school. या एक विद्यालय परि काम करे कोन पई a school for democracy. it is act as a school for democracy. गणतंत्र पई एक स्कूल भावे या कार्य करे. it act as a school for democracy where the citizens
are imparted political and popular education regarding issues of local and national importance. स्थानीय एवं जातीय गुरुत्व थिबा समस्या गुड़िक संबंध में शिक्षा संबंध में समस्या संबंध में माने सेठू एजुकेशन पांच लोकल गवर्नमेंट. So the importance of the urban government in India has considerably increased in the post-independent era with the framing of the constitution embodying the principle of democracy and a welfare state. When our constitution after independence embodies a welfare state, जनमंगलकारी सरकार भाव को ग्रहण कला. At that moment, the emphasis upon the government in urban areas to promote social and economic development. सरकार principle of democracy एवं emphasis of the government in urban areas welfare state रे गुरुत्व देला सेतिक बेले the emphasize कला कहा ऊपर ना urban areas to promote socio economic development. तो जेतु है का welfare state, it is necessary on the part of the welfare state to take necessary steps for the socio-economic development of the urban area, because welfare of the urban people is also a part of our part enshrined in our constitution. Our constitution gives directives to people to promote the socio-economic development of the urban people. So that's why there is a important role on the part of local self-government to for the people. So then, how this local government evolved in India? Evolution. What is the emergency? How the local self-government emerged in India? So the emergency or evolution of the local government in India may be analyzed from two point of view or two phases. There are two phases of development of the emergency of local self-government. First is British phase, and second is the independence, post-independence stage. So the evolution of local government in India has passed, may be analyzed under these two stages of development. First is British phase. So after the Britishers come to India, the first sign of local government can be traced to 1687. Right? The Britisher mane asiba pore a local government concept आमे 1687 मसियारे origin बा उत्पत्ति हेतिबार आमे चिन्ह परिबार. Kaina the first time in that year there was established a Madras Municipal Corporation. Madras Municipal Corporation was established in the year 1687 by the Britishers. So later, the Royal Charter of 1720 established a mayor's court in each of the three presidencies in India, that is Madras, Calcutta, and Bombay, or presently Mumbai. So these three presidency, they 1720 the mayor's court was established by the British government. So as a result, in 1850, 1850 an act was passed in British India permitting the formation of a local committee, to make better provisions of public health. So, ये जो committee पढ़े 1850 रे गोटे British India रे गोटे committee formation आला, गोटे body formation आला जहाँ काम आला how to look after the public health, public स्वास्थ्य, जनसाधारण को स्वास्थ्य को देखिला पिला आरो कामो, the provisions of public health. So, however, for the real credit for the emergency of local self-government goes to Lord Ripon, the then British chief in India, Lord Ripon, in 18 May 1882, 1882 मसीह Lord Ripon May Masare has first held the Magna Carta of local government.
लोकल गवर्नमेंट रो मागना काटा प्रथम थर पई से एस्टैब्लिश करे 1882 मसिया रे एंड सजेस्टेड टू रिफॉर्म द instilling life into the local bodies एवं सी जो how to provide life to make the local bodies lively local bodies की बा local प्रशासन को केमती जीवंत करियबो सेति पई से केतेक सजेशन देले तेनु सेति पई he has been termed as the father of urban local self government लॉर्ड रिपन को urban local self government रा फादर बोली कहा जाए because he has take a very positive step for the development of local government. But local government was done to primarily to serve the British interest. But Lord Ripon has instituted this local government not for the welfare of the Indian people, but he organized this local self-government for British administration, for the betterment to help British administration. British प्रशासन को सहायता प्रदान करिया पई बा प्रशासन में आउटे सहायता करिया पई से एभଳି एक संस्था गठित लोक मानको इंडियन मानकर वेलफेयर पई से गठित नथले बट इट टर्म फॉर दिस ब्रिटिश इंटरेस्ट अदर देन टू प्रमोट सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हमर सेल्फ गवर्निंग बॉडी रा प्रमोट करबार तांकर जो डिसीजन थला रादर ही हैज कंस्टिट्यूटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू असिस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट to take care of the public health and all this. But a significant development after Ripons came in the year 1907 when the rising discontent among the Indian masses led to the appointment Royal Commission. तारे लोकमानंग भितरे उटे डिस्कंटेंट देखा गला ब्रिटिश शासन भितरे ब्रिटिश शासन उटे रॉयल कमिशन अपॉइंटमेंट कले ते अपॉइंटेड ए रॉयल कमिशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन he appointed a royal commission on decentralization to inquire into the financial and administrative relation of the government of India and the provincial government and the authorities subordinate to them. As a committee to inquire the financial and administrative relation, these तीनटा प्रकार government रहिला British government, provincial government and local government and का भितर the financial and administrative देखिया पई से royal commission announce कले. In order to increase the devolution of power and gradual democratization of the local bodies, the Royal Commission had recommended the chairman should be elective and non-official, and the majority of members should be elected. ये जो committee रा अधिकांश लोग elected हवे एवं chairman मध्य elected एवं non-official हवे. Another recommendation of this committee that municipal bodies should give more power. Municipalities should give more power in matters of taxation and control over budget. These are the recommendations of this committee. This act also provided for the reduction of official control over municipal bodies. Municipal bodies उपरे केमती control ह्रास पाइबो ता उपरे समाने मध्य गुरुत्व देले. They gives more stress on reduction of control on municipalities. Then the Government of India Act 1919 was passed, and it has introduced system of diarchy, and the local self-government became a transferred subject under the change of a popular minister of the provincial legislature. So, diarchy माने दुई प्रकार व्यवस्था गुटे डेवलप विकास कले. So the Government of India after 1919 Government of India 1919 another Government of India Act was passed in 1935. 1935 से आउ गोटे Government of India Act आला जहाकी provincial autonomy उपरे गुरुत्व देला, which gives more stress on provincial autonomy. Again, declare local government as a provincial subject. एवं सही Government of India Act 1935 local government को the local self government को गोटे provincial government रो अंडर को नहीं आसला. इटा provincial government provincial राज्य autonomy को पड़े आसला. But the Act of 1935 abolished the system of diarchy. जो system of diarchy टा introduce करथला Government of India Act 1999 ताको Government of India Act 1935 abolish कर दला and introduced popular government in the provinces. The British उटा popular government introduce कले एवं British 1947 में भारत छाड़ी चली गरे, किंतु से माने कोनोसी उटे आत्मनिर्भरशील local self government प्रतिष्ठा करी गले नहीं. That local self government that the Lord Ripon established that remain haphazard
and was not serving the people's needs and necessities. So, however, in the British phase, it laid the foundation of the local self-government by Lord Ripon. So, Lord Ripon to local self-government of father bully kuajaye. So, then come the post-independence period. After the British period, they come the post-independence. Amar Bharat Swadhanata labh karigala 1947 re. Then after independence, our constitution was accepted in January 26, 1950, and in that constitution, a reference to urban local self-government was entered in entry 5 of the list of the 7th schedule. Saptama schedule अनुच्छेद state list re a local self-government kotha rahila. So, but the most important landmark in the evolution of urban local government in the post-independent India is setting up a Ministry of Urban Development in 1985. 1985 रे urban development गोटे ministry गठन होला for the first time. जोटा कि गोटे landmark in the history of local self-government. एटा history of local self-government गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण घटना भाबे the ministry of, prior to that different ministry of health, ministry of some other ministries, urban development, ministry of health sometimes took the part of this. एगुडांकर सब चार्ज नउतले का local self government का अंडर थिला केतबेले डिपार्टमेंट अंडर थिला के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर थिला ए भाबे it has shifted from one department to other. But however, in 1967 the subject of urban development was transferred to further Ministry of Health, which is designated Ministry of Health, Family Planning, Work, Housing and Urban Development. Then further in 1985, on taking place of alarming pace of the country at the government, then 1885 बेलू भारत रे urban government urban area, urban population बहुत बढ़िया को लागला. Then so in 1998 the government set up a national commission on urbanization. जेतु जनसंख्या बढ़ुची और सिटी संख्या बढ़ुची एवं पॉपुलेशन बढ़ुची तेणु तांका पाई गोटे ब्रॉड पॉलिसी फॉर्मुलेशन पाई गवर्नमेंट गोटा नेशनल कमिशन ऑन अर्बानाइजेशन गोटे गठन कले एवं एटा एई संस्था विभिन्न रिकमेंडेशन प्रदान करला. The Ministry of first recommendation are the Ministry of Urban Development to be restructured to make it the nodal ministry to build urbanization. Urbanization को गोटे नोडल एजेंसी कला को ए कमिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गोटे स्वतंत्र मिनिस्ट्री बनेला एवं ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गोटे नोडल एजेंसी हला फॉर अर्बनाइजेशन एवं गोटे नेशनल अर्बनाइजेशन काउंसिल गठन करा गला टू फॉर्मुलेट अर्बनाइजेशन पॉलिसीज. So, जेतु urbanization is growing rapidly in Indian society after independence. So, the गोटे urbanization council गठन करी तार function evaluate करिवो एवं तार policy formulation urbanization पाई policy करिवो एवं urbanization केमती the problem, how to solve the problem of urbanization is so related recommendation देला. Another important recommendation that an Indian Council of Citizen Actions was formed. Indian Council of Citizen पूरा मध्यम गठन करा गला एवं तार काम वाला तो ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटरी इफोर्ट्स एटा गोटे वॉलंटरी इफोर्ट्स हिसाब रे गठन करा जाय एटा विभिन्न प्रकार सजेशन दबो ए सब करा गला. अनदर रिकमेंडेशन दैट ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50,000 सेटा गोटे अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट अंडर रे छरा गला. जो शहर रो सिटी 50,000 उध ताको प्रमोटेड वन अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट ताको गोटे अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट रो विकास करा गला एवं सेटा गोटे अर्बन कम्युनिटी रे करा गला. So this is how that local self government has evolved in India in British period and in after independence, the post independence. Then a Nagarpalika bill was passed in 1989. The Nagarpalika bill passed kara gala 1999 bere ebong Nagarpalika bill was there to this Nagarpalika bill introduced kara gala 1899 to implement the local self government are the trusted the people. In 1991 the Congress ministry come to power and it introduced bill with slight modification. से तादरे किसी modification करा एवं आर purpose कौन थला ना to rejuvenate the urban local government को to revitalize the urban local government and to develop it more vibrant, to make it more vibrant. The Nagarpalika bill was passed and Nagarpalika it was further
um, it was modified by the Congress government in 1991. Then, so it is the Constitution after 1991. In 1992, a 74 Constitutional amendment was passed. 74 74तम संविधान संशोधन बिल आसला जोटा कि 1993 ठाରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା କିନ୍ତୁ 1992 ରେ ହେଇସାରିଥିଲା जोटा कि उभय पार्लियामेंट रो उभय हाउस रे पास करा एवं सेही बिल रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गोटा नुआ टर्न नेबा जोटा कि हमर पीआरआई इंस्टीट्यूशन एट विलेज लेवल पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस विलेज लेवल एवं म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन अर्बन गवर्नमेंट एटा इंट्रोड्यूस कराला एवं तांको फुल पावर विभिन्न प्रकार क्षमता प्रदान करागला विभिन्न प्रकार फाइनेंशियल सुविधा प्रदान करागला एवं बहुत प्रोविजन एवं डिफरेंट काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ये सब व्यवस्था करागला इन द 74 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेणु संविधान 74तम संशोधन बयाला बेरे जोड़ा इफेक्टिव है 1993 रु अनेक प्रकार इंप्रूवमेंट आला इन द लोकल अर्बन बॉडीज एवं लोकल अर्बन बॉडीज रो तार एटा को गोटे स्ट्रक्चरिंग कला जेमति पीआरआई विलेज को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गांव को ताको तीनोटी थ्री टायर सिस्टम ऑफ आवर लोकल गवर्नमेंट है करागला विलेज लेवल ले रूरल सोसाइटी रे सो सेटा थला कोन डिस्ट्रिक्ट बॉडी ब्लॉक पंचायत समिति देन ग्राम पंचायत सो सिमिलरली इन म्युनिसिपैलिटी अर्बन गवर्नेंस रे ताकू छवारे व्यक्त करा फर्स्ट होजी फर्स्ट हला द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन then municipality, then notified NAC by notified area council, then town area committee, township and cantonment board. So these are the different types of layers of urban local government. Urban local government. It is urban local government of tiers. So these are the different local governments. Municipality, municipal corporation, municipal council, or notified area committee, town area committee, township, and cantonment board. These are the in Nagarpalika bill. This structuring of urban local government was made under this, and municipal corporation are set up in big and large cities. Bada bada sahara manankare municipal corporation rohila headed by a mayor and a standing committee. Ote committee rohila ebong tar ote mayor rohila. Similarly, municipal council was a statutory body created by an act of the state legislature, and the criteria setting up to varies from state to state. Municipal council consists of elected corporated body and associate members. It is continue for 5 years. Once elected, the council continue for 5 years. Then come notified area council (NAC). So NAC was set up in those areas which are not yet ready for declaring themselves as a municipality. जो गुडा को म्युनिसिपालिटी हेनी से गुडा को एनएससी बा नोटिफाइड एरिया काउंसिल भाबे ग्रहण करागला एवं नोटिफाइड एरिया काउंसिल हिसाब रे दे सर्व वेरियस पर्पसेस द स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट ए कमिटी याकू नोटिफाइड एरिया कमिटी कहला द कमिटी एडमिनिस्ट्रेट दिस एरिया एवं सेही एरिया को प्रशासन प्रदान करबा दायित्व होला से कमिटी देन कम नेक्स्ट कमिटी हला टाउन कमिटी इट इज इन टर्न ऑफ सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी they are constituted in the smaller towns छोटे टाउन बा छोटे शहर जो जनसंख्या कम सेठी टाउन कमिटी अंडर रे शासन प्रदान करागला से एरिया रे देन कम कैंटनमेंट बोर्ड देन टाउनशिप so township हो the area well planned and contains several facilities गोटे छोटो एरिया जोटी विभिन्न प्रकार फैसिलिटी अवेलेबल थिबो and expenditure of these services are bear by the इंडस्ट्रीज कंसर्न ए जो टाउनशिप गुडा एटा बेसिकली को एरिया रहला ना एटा जेंति जो से गुडे नवा इंडस्ट्री बसियो फॉर एग्जांपल राउरकेला हमें कहू जे राउरकेला टाउनशिप सो सेठी जे फर्स्ट हमरो हला स्टील प्लांट सो सेठी गुडे टाउनशिप करला से गुडे टाउनशिप को ए प्रकार एजेंसी प्रदान करागला एवं इंडस्ट्री कंसर्न तार सर्विसेज एक्सपेंडिचर सब बियर करबो से इंडस्ट्री but administration will by the urban government सेटा को टाउनशिप कहवा जोटी इंडस्ट्रियल एरिया जेमति हमर सुनाबेडा राउरकेला एगुडा सब टाउनशिप कह जाय सो देन कम कैंटनमेंट बोर्ड हमर आर ओनली बॉडीज व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री कैंटनमेंट बोर्ड कैंटनमेंट साधारणतः हमर डिफेंस सहित जड़ित
छोट छोट जो एरिया रे कैंटोनमेंट डिक्लेयर करा जिवो से कैंटोनमेंट बोर्ड बॉडीज सेटा कंट्रोल बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री ताको डिफेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट रो डिफेंस मिनिस्ट्री ता कंट्रोल करिवो सो नगरपालिका बिल 1999 रे ए प्रकार सब प्रोविजन व्यवस्था करा सो प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी and another most important thing is that the housing board, the single purpose of all these agencies, municipal corporation and other single purpose agencies, a statutory body under separate act in the respective state government, the HUDCO. The HUDCO was established to provide housing facilities in all these body in these urban municipal bodies. And to promote the development of a city, the improvement trusts are constituted. केतक improvement trust मध्य करागला केतक municipal corporation ने सब improvement trust से local government रो बा से urban government रो केमि development करा जिवो the power and function of the improvement trust are specified गोटे act द्वारा जोटा कि state government create करथिबो बा local body create कर त गोटे interstate variation एथे देखि होय ए प्रकार जो improvement trust रे सो हमरा दिल्ली रे जेंते दिल्ली डेवलपमेंट ट्रस्ट बा दिल्ली डेवलपमेंट एजेंसी जोटा गडा आइतला जस्ट आफ्टर इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेटा मध्ये सेही आर उटे एग्जांपल सो दीज आर द सर्टेन नगरपालिका बिल दिस म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन स्ट्रक्चर्ड अंडर दिस 6 tier model under the 74 constitutional amendment in 1992 which had become effective in 1993. So then, what are the functions of municipalities? Municipality concept function. We'll discuss about the functions of the municipality. So there are certain functions laid down in the 12th schedule of the constitution of the local bodies. So municipalities will perform certain function. This municipality function, urban planning, including town planning, urban area planning, regulation of land use and construction of building, land केमती की यूज करिवो तार रेगुलेशन एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोटा घर गड़िबा देन प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरिया रो सामाजिक और अर्थनैतिक विकास ପାଇଁ योजना करिबा देन रोड बिल्डिंग रोड एंड ब्रिजेस widening road and bridges road building and widening roads building bridges over rivers or एगुड़ाक सब besides water supply for domestic, industrial and commercial purposes, water supply, provision of water supply kariba municipality under roila water supply both individual consumption, commercial consumption and other consumption eighth pai एगुड़ाक मध्य सब karibo. Then public health, sanitation and solid waste management एगुड़ाक सब these are also the functions of municipality. Keemti public health, because majority of the population of the city are very increasing at a very high rate. To provide health facilities to all these people under a municipality is also an important affair. So that's why the purpose of municipality, aim of a municipality is to provide public health, sanitation, solid waste management, because location क्या बहुत हो जाती है to drainage water, solid waste management, solid waste and liquid waste management is सबको मतलब तारा दायित्व. Then fire services, क्योंकि बहुत लोग हो जाती बहुत कोटाबाड़ी अच्छी एवं क्या मची then fire services मतलब रहेगा to provide necessary wherever they need inconveniences caused, then fire services will be there. Then another is urban forestry, protection of environment and promotion of ecology. Urban forestry, जो भी urban forestry सब अच्छी, urban area जो किसी अंचल पूरी forestry बा जंगल अंचल थी वो ताको protect करिया, and to protection of environment, urban environment को केमती protect करिया मतलब municipality कम urban environment पहले हमें कहाँ बुझो साधारणतः water, air, soil ये सब केमती pollution, noise pollution ये सब केमती न होगा सेति पई necessary protective measure ग्रहण करिवा एटा मध्य गोटे काम. This is also the work of a एटा मतलब गोटे काम रहला तार municipality गोटे काम रहला. Another is promote ecological aspect,
हमर एनवायरनमेंट सोशल इकोलॉजी केमती बेटर हबो ताकू मध्ये प्रमोट करिया काम एंड स्मॉल स्लम इंप्रूवमेंट जो स्लम जो बस्ती अंचल जो रहिला बस्ती अंचल विकास केमती बस्ती लोक मान खैतान तंका भीतर हेल्थ एंड सैनिटेशन तम प्रोवाइड करिवा ए सब काम रहिला म्युनिसिपलिटी मुनिसिपल काम another is safeguarding the interest of weaker sections of society and including the handicapped, mentally retarded and physically challenged persons. ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଲେ ଏଇ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫଗାର୍ଡ କରିବା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଫଗାର୍ଡ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇୟର୍ନିଂସ୍ ସେମାନେ କେମିତି ଇୟର୍ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ steps नबा on the municipality काम ଆଉ कोन ना अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन ମୁଁ କହିଥିଲି ଗଲା କାଲି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ନଉଥିଲେ ଯେ ପॉवर्टी रूरल सोसाइटी केवल अछि अर्बन सोसाइटी नाही କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ recent studies show that there is urban poverty is more acute than even the rural poverty ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ अर्बन ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତି ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବର ରହିଲେ ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ अर्बन पॉवर्टी सिचुएशन पडुची ତେଣୁ ସେ अर्बन पॉवर्टी କେମିତି ଆଲିଭେଟ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ अर्बन बेकार संख्या मध्ये बढुची ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏବଂ अर्बन पॉवर्टी ହ୍ରାସ କରିବା ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି म्युनिसिपालिटीର ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ अर्बन ଆମିନିଟିଜ ଲାଇକ ପାର୍କସ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ सिनेमा हॉल्स एमिनिटीज ए सब मंडपज ए सब प्रोविजन करबा कामला पार्क बिल्डिंग करबा कोटे गार्डन तैयारी करबा प्लेग्राउंड एते लोक कहले पिला माने खेलिबे तांके स्थान दरकार ये सब काम प्रोविजन प्रोवाइड करबा मध्य म्युनिसिपालिटी रो काम तापरे प्रमोट कल्चरल एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स एजुकेशनल कल्चरल एजुकेशन पई प्रोविजन करिया म्युनिसिपालिटी तार स्कूल बसेबो कॉलेज बसेबो केमती पिला मान को एजुकेशन बेटर एजुकेशन दिया जीवो सेति पई व्यवस्था करबो तेन स्कूल एजुकेशन एंड कल्चरल केमती विभिन्न कल्चरल मीटिंग अब कल्चरल हॉल सब रहइबो कल्चरल मीटिंग्स पई कल्चरल हॉल बिल्ड करबा ह ए सब काम रहइबो मध्य म्युनिसिपालिटी रो देन ब्यूरियल ग्राउंड्स एंड इलेक्ट्रिक सेरामोनिटोरियम जो हमारा शवदाह व्यवस्था जो सब श्मशान विकास एवं श्मशान लोक संख्या भितर श्मशान आरेंजमेंट करबा एवं श्मशान के विकास हम सेटा देखा एवं कैटल पॉन्ड्स प्रिवेंशन क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स कैटल पॉन्ड्स माने हमें जो बुला गाई सब गोरु अछंती सब तांको केमती कन्फाइनेशन रहबे तांको जतन नबा एवं तांको माने पानी पीबे तांको पई प्रोविजन ऑफ वाटर करबा एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एवं एनिमल जो पशु मानक प्रति क्रुएल्टी निष्ठुरता देखा जाउची लोक माने चार जन दुई बात खाया गुनाती से कोने बोले कि पॉलिथिन खाउचंती एवं विभिन्न प्रकार रोग शिकार होचंती सो सेगुडा को मते तांको प्रति निष्ठुरता कोन करबा एवं जो मरा जाउची सब विभिन्न पशु को हत्या करा जाउची परमानेंस पई रास्ता घाट घाट करे जो नै सेठी ताको प्रिवेंट करबा ए सब म्युनिसिपालिटी रो काम आ कोन प्रोवाइड द वाइटल statistics make provision for the vital statistics means the birth marriage death ए सब रो registration of marriage birth death registration करबा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स प्रदान करबा से रासो होची आर काम कर म्युनिसिपालिटी अपन बर्थ प्रोवाइड बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट सो म्युनिसिपालिटी प्रदान करबो सो पब्लिक कम्युनिटीज लाइक स्ट्रीट लाइटिंग ए सब करबो बस स्टॉप्स प्रोविजन ऑफ सिटी बस पब्लिक कन्वीनियंसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ए सब प्रोवाइड कर म्युनिसिपालिटी रो काम मध्ये रहबो अगुन रेगुलेशन ऑफ framing laws for the to check criminals take necessary steps to check police personnel को नियुक्त करी जल्दी कंट्रोल करिवो क्राइम इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टाउन ये सब रहला फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपलिटीज देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अर्बन प्लानिंग एट लोकल लेवल तबरे हम पढिबा दैट इज कंसर्न विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अर्बन प्लानिंग एट लोकल लेवल अर्बन प्लानिंग पई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोन सांगठनिक संरचना कोन will discuss. The 74 constitutional amendment stipulated setting up a metropolitan planning committee. तो 74तम
जो संविधान संशोधन है सेटा गोटे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी गढ़िया गोटे सजेस्ट करा तेणु सेटा रिक्वायर दिस रिक्वायर्स that in every metropolitan area a metropolitan planning committee would be constructed for preparing a development plan for the metropolitan area as a whole से जो कमिटी रो काम कोन ना गोटे डेवलपमेंट प्लानिंग करिवो फॉर दी मेट्रोपॉलिटन एरिया रो केमती डेवलपमेंट हे परिवो ता पई से गोटे प्लानिंग करिवो prepare a plan for this metropolitan area that is the work of the municipality a organization of urban planning karibo and then this development plan must take the following कैटेगरी फैक्टर को अकाउंट को नबो ये जो डेवलपमेंट प्लान कमिटी फॉर्मेशन करिवो से केतेटा दिस प्लान विल बी प्रिपेयर्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत्स इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया एटा का द्वारा हो ना म्युनिसिपैलिटी द्वारा प्लान ता करा जिवो एंड द मास्टर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द टू मैटर्स कॉमन इंटरेस्ट उभय प्रशासन भितर जो मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट साधारण इंटरेस्ट जो रहिबो ताकू कर जिवो एवं शेयरिंग ऑफ वाटर एंड अदर फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेस जल एवं अन्य प्राकृतिक संपद को शेयर करिया पई रहइबो ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट उभय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जो प्रायोरिटी और लक्ष्य रखिसेंती ताकू मध्ये माने दृष्टि देखिबे अर्बन प्लानिंग कला बेले आ कोन करिवे ना अदर अवेलेबल फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेस जदी किछि अरेंजमेंट अच्छी से गुड़ा विषय दृष्टि ये सब को दृष्टि दे से कमिटी जो आमर प्लानिंग कमिटी ये सब को विचार को नहीं तार प्लानिंग कैप्चर करियो so this after this then the urban local bodies in India fail to come up to the people's expectation ये सब सत्वे urban bodies urban local bodies in India fail to come up to people's expectation से माने तथापि लोक मानकर एक्सपेक्टेशन अनुसार कार्य करि पारु नाहंती से पई देयर इज ए मेजर शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस इज ए मेजर कांस्टेंट काई काम करि पारनांती ना शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस करप्शन नेपोटिज्म एगुडा का मध्य ऑब्स्ट्रक्ट करूची जे काम करिवारे सक्सेसफुल काम करियारे ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड नॉन यूटिलाइजेशन अवेलेबल रिसोर्सेस प्रॉपर्ली नॉन यूटिलाइजेशन केतेक रिसोर्स रे यूटिलाइज हे पर नॉन यूटिलाइज हो जाउची एगुडा सब केतेगुडा प्रॉब्लम रहउची तर ए जो प्लानिंग एट लोकल लेवल करिवारे कोते प्रॉब्लम प्रथम प्रॉब्लम है कोन ना एगरे अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया फेल टू कम अप टू लोकल एक्सपेक्टेशन एला प्रथम समस्या अर्बन प्लानिंग लोकल लेवल करिवारे कोन समस्या रहउची सेकंड होउची नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स जो केतेक रिसोर्सेस अछि सेटा मध्ये यूटिलाइज हेई पारु नाही थर्ड प्रॉब्लम होउची म्युनिसिपल फाइनेंस सफर फ्रॉम सीरियस फ्लॉज म्युनिसिपैलिटी पाखरे अधिक फाइनेंस पई फाइनेंस रा सुविधा नाही तेनु से त्रुटिपूर्ण फाइनेंस नीति सेटा पई जाई आनंद रहउची ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड रेगुलर बेसिस ऑडिट हो म्युनिसिपैलिटी अनेक गुडाके अनेक समय ऑडिट होनी जोटा कि फाइनेंस इरेगुलरिटी करप्शन करियारे सहायक होची एंड देयर एक्सेसिव कंट्रोल ओवर अर्बन लोकल बॉडीज एज ए रिजल्ट दैट परफॉर्मेंस सफर अर्बन लोकल बॉडीज ऊपर एक्सेस कंट्रोल सरकार रहउची बा लोक मान प्रेशर रहउची सरकार कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल रहउची जा फले आर परफॉर्मेंस कमी जाउची सो एगुडा का सब जदी माने हमको समाधान करा जाई पाइबो तले अर्बन प्लान लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग को बेटर अप करा जाई पारिबो then suggestion for improvement in the functioning of the local administration हमर जे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जोडो का हमें कहूछु कोन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ताको हमें केतेक सजेशन द्वारा इंप्रूव करि परिबा ए जो प्रॉब्लम सब रहला फेस करले हम देखिले ताले कोन कले हमें ए को इंप्रूव करि परिबा so certain suggestions ek reuji that people's participation is a must effective mere participation is not necessary effective participation people is a must for the improvement of this administration effective participation of people is a must second the representative of people is very essential representation people must properly represent their grievances to the
municipalities. Third is that coordination between municipal government and other public agencies. तांका भितरे coordination रहिबो. There must be coordination. Municipal government, state government and other agency. तांका भितरे गोटे coordination जदि रहिबो ताले हमें local administration रा कार्यटा आउरी सफल हबो. Another is political support. Political support must be behind this municipal administration. Municipal administration पछरे जदि political support न रही तार political funding आसीबा इसु करिया इसु सहज होबनी विभिन्न प्लानिंग को इफेक्टिव करबा इसु सहज होबनी तो political support मत दरकार. Then organizational performance को बढ़िया efficient होबा. The organizational performance of the organization structure of performance ता efficient होबा. सेति पई necessary steps training to the personnel and performance appraisal गुडे हवा दरकार. इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करा गले स्टाफ मानक भितरे आउरी बेटर हवा से मंदर. Then another is that adaptable to shift priorities. एटा गुडे फ्लेक्सिबल थिबो तो अडॉप्ट एवं निजु को अडॉप्ट करथिबो चेंज ऑफ प्रायोरिटीज. निजर प्रायोरिटी जोडा अग्राधिकार जोडा दला कथा आमे गुडे अग्राधिकार फिक्स कराई छै हम एटा अग्राधिकार दे दिबो दरकार पड़ला से अग्राधिकार चेंज हे ता आबरे शिफ्ट करबो. ए प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी मध्ये रहइबा एवं प्रायोरिटी फिक्स होबा दरकार. तेनु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजु को अडॉप्टेबल करिवो डिफरेंट सिचुएशन सहित. यदि अडॉप्टेबल करि परला ताले मध्ये एटा उते परफॉर्मेंस का फंक्शनिंग बेटर हे करिवो. देन इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस. हमरा प्रोग्रेस इवैल्यूएशन करे दरकार. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केते प्रोग्रेस कला एडमिनिस्ट्रेशन लोक माने तगो पैसा दोचंदी स्टेट गवर्नमेंट पैसा फाइनेंस दोची लोक माने टैक्स दोचंदी ए सबुर गुडे अकाउंटेबिलिटी रहला दरकार. तेनु से अकाउंटेबिलिटी पाई हमको इवैल्यूएशन दरकार. यदि हम वर्क इवैल्यूएशन न करिबा तार म्युनिसिपल ऑफिसर एफिशिएंट होबनी. तेनु सेठी पाई राइट इवैल्यूएशन मध्ये दरकार. तो इवैल्यूएशन हेले अकाउंटेबिलिटी तो ए सब जदि करा जाय परिबो ताले हमरो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नो फंक्शनिंग ता बेटर होबो. Administration will be better. Then another outgay improvement कौन करा जाय परिबो for participation of civil society organization local governance. सबुठ important होउची जे local governance को outgay केमती बेटर करा जाय परिबो सेति पई participation of civil society. Civil society माने जो नागरिक समाज. That means people, senior citizens or people, all the people citizens must participate in this. हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लॉन्चिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस. 74 अमेंडमेंट गवर्नेंस डिसेंट्रलाइजेशन ऊपर गुरुत्व देला. सो एम्पावरमेंट सिविल सोसाइटी हैज गेन्ड करेंसी इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज. मेट्रोपॉलिटन सिटीज रे हम अनेक समय देखुचे अनेक लोक माने सीनियर सिटीजन माने हरे रहउछन्ती एवं लोक मानकर ग्रीवांसेस ठीक से मीट करा जाई पर नै. तो ए सब पई द एम्पावरमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी गेन करेंसी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज रे सशक्तिकरण हेची वर्तमान को मानकर ए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज रे लोक मानकर. So attempts are being made to involve the communities to manage service within the cities. Cities रे विभिन्न cities रे जो सर्विस जो सेवा से मिलची ताको विभिन्न भागीदारी बेसिस रे पार्टिसिपेटरी मेथड भागीदारी मेथड पार्टिसिपेट मेथड रे ताको सेति बढ़िया पई कम्युनिटी ग्रुप एवं रेसिडेंट्स एरिया रे to मैनेज करिया पई विभिन्न सर्विस जो रहउची सेति पई गोटे कम्युनिटी गराई छी. रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो माने म्युनिसिपलिटी अंडर रे जो रहउचंती रे तांकर गोटे कमिटी गरा गलानी सेटा कोची रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन माने आदिवासी मंगलकारी संगठन संघ ए माने तांकर विभिन्न दाबी को नेकी म्युनिसिपलिटी के जिबे एवं तार डेवलपमेंट एवं हेबो जा पर सेमंकर पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट आउ रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन and कविता कोऑर्डिनेशन रही विभिन्न सर्विस फैसिलिटीज अवेलेबल पाए. जेतो nowadays the modern society is getting more and more democratized and the administration is more and more decentralized. The role of volunteer organization has been increased. एही परिप्रेक्षित रे हमको volunteer organization बा स्वयं स्वच्छासेवी अनुष्ठान गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य रही.
एमाने गोटे प्रोएक्टिव रोल कहउचंदी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम ऑफ अर्बन प्रॉब्लम अर्बन सोसाइटी रे जते प्रकार प्रॉब्लम देखा जाउची से सब को कार्य करिया पई अनेक समय रे अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन took the help of these NGOs because all these works cannot be services providing services, all these work of the municipalities cannot be performed by the government itself. ता द्वारा बा municipality द्वारा इसु संपादन करा जाई पारु नहीं तेनु to facilitate or to reach the service at the doorstep more effectively that the NGO has come to the front and the different services has been allocated to the by the local bodies, local government to the NGOs for this. NGOs are acting as the source of various information for various process to reach the components of the society. एमाने जो तथ्य पहुंचनी सेमाने लोकों पाखरे पहुंच directly. These organizations are also imparting training to the people of the locality. विभिन्न लोक मानकु sanitation ए समरे विभिन्न से how to take part in election ए सब विषय ट्रेनिंग दोचंदी सचेतनता बढ़ुचंदी एवं various problem विरुद्ध रे to fight against the corona विरुद्ध रे केमति लड़ाई करिया सेति पई different NGO मध्ये are also fighting and moving those steps to creating consciousness among the people लोक मानकु भितर सचेतनता सृष्टि करचंदी सो ए सब काम मध्ये NGO को जाउची. These organizations became more important and instrumental to improve the quality of service in selective localities. And quality of service तांका जो गुसान जेतु प्रोवाइड करचंदी तांका द्वारा आउरी बेटर होउची. So by this we complete the local self-government. Then come to urban planning. Second chapter of this unit or this block is that is urban planning. So what is planning? And why urban planning is necessary? You might know, if you give a look towards the Indian cities and towns, you find these cities are growing haphazardly, since without any planning. It's just a cumbersome growth. It is a haphazard growth, unsystematic growth. You know how to make it more systematized. So planning is necessary. So if you look toward the history of urban development in India, you find this urban growth has resulted in unplanned, haphazard, ugly urban settlement, very growth of slums. These are very haphazard. जी जोड़ी पारला उड़े growth करी पकला, जी जोड़ी वाला house build करला, ता मनो इच्छा जी इंती करी पकला. So that give a very ugly design and became very also create many problems. So that's why planning is necessary. That's why urban planning is necessary to combat the menace of urbanization and resultant problem. जदि हमें urbanization बढ़िबो दिन को दिन बढ़िबो. Urbanization has been increasing, population in urban area has been increasing rampantly. तेणु जदि एको हमें planning जदि हमें न करिबा ताले it will create many problems. Urban and the menace, the threat of urbanization will going on increasing. An important function of planning is in a purely physical term is the judicious use of land as a scarce commodity in the urban area. Judicious use of planning is a guruttwapurna aspect of planning of land. It is the most important. Others are important, but planning of land is a master plan. The master plan कहले plan of land. Urban land रो केमि management करिवो सेटा होची सबुठु काना urban land in urban area is very limited एवं scarce. तेणु judicious use of land planning कले आमे judicious use of plan करि परिबा एवं सिटीटा ugly हबनी, movement of people will not be choked, traffic jam ये सब हबो नै, on the wide road ये सब हबो नै. So सेति पई planning is to increase the beauty of the city
planning is a must. So land planning is thus a very essential need of the urban area. So the state government have to legalize upon planning and ensure its implementation, which is ultimately the responsibility of the urban government. State government एटी स्टेप नौची किंतु याको इंप्लीमेंट करिवार अल्टीमेट रेस्पोंसिबिलिटी होची अर्बन गवर्नमेंट रो. तेणु अर्बन प्लानिंग दैट्स व्हाई वेरी इंपोर्टेंट फॉर people. So planning ordinarily mean a preparation for future. Planning means preparation for the future. आमे भविष्य पई केमदी योजना करिवा, भविष्य पई केमदी प्लान करिवा, सेटा होची आमे प्लानिंग बोली कहूछु. So it is a conscious process. सचेतन भावे आमे योजना करू for our better management of the affairs. Urban planning is a process by which the use of land is controlled and its development is regulated. Urban planning होची गोटे प्रोसेस. एटा गोटे माने अर्बन प्लानिंग ता गोटे प्रक्रिया. एटा गोटे धारावाहिक भाई चली होता है. आज प्लानिंग करदला काली सरी गला सेमति किछ नै. So process so far the urban centers exist, planning will go on continue. So that's why planning is urban planning is a process by which the use of land is controlled and development is regulated by the for public interest. इटा रेगुलर करे कोन पई ना पब्लिक इंटरेस्ट समस्तंगर उपकार पई प्लानिंग करा जिवो. जे प्लानिंग करा जिवो ताले समस्तंगर समस्त सुधार सम्मुखीन हो. It involves both the method and development that contribute to the organization, development, the evolution of urban area. Urban area केमती डेवलपमेंट हबो, केमती इवोल्यूशन हबो, केमती तार ऑर्गेनाइज करा जिवो, ए सब को प्लानिंग हेल्प करिवो. एवं प्लानिंग द्वारा हमें हमर एनवायरनमेंट को अरेंज करबा और इकोनॉमिक लीगल एस्पेक्ट को कंट्रोल करबा, वेलफेयर प्रमोट करिया लोक मानकर ये सब संभव ही पाइबो. डील्स विथ द स्पाटियल इंसिडेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अर्बन स्पेस दा करि पाइबो. एंड द फेमस सोशियोलॉजिस्ट लाइक द लुइस मम्फोर्ड अर्बन प्लानिंग को डिफाइन करी कहचंती जे सिटी प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग इन्वॉल्व्स द कंसीडरेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन टाइम एंड स्पेस. ह्यूमन एक्टिविटीज मनुष्य से टाउन भितरे केते बेले करिवो, कोन करिवो, तार टाइम और स्पेस स्थान रहिबो, कोडी कोन करिवो, टाइम एंड स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ नोन फैक्ट्स अबाउट द प्लेस. जोति की लैंड अछि, हमें जति की नोन अवेलेबल लैंड अछि, तार भीतर हमें कोन करबा सेटा को करबा about the place, work and people. कौन काम करिबा, को मानक पई करिबा, इदु इन्वॉल्व करता है. And it also involves the modification or relocation of various elements of the total environment. Total environment ro relocation एवं तार element गुडा को मध्य इन्वॉल्व करिवो. And at the same time increase the services to the community. एवं प्लानिंग करबा द्वारा हमें कम्युनिटी पई सर्विस टाको आउटके मोर इफेक्टिव करिया और बढ़ाई पाइबा. यदि प्लानिंग वे रहबो ताले सर्विस लोकंग डोर स्टेप रे पहुंचा को और सुविधा हबो एवं क्विकर हो. एवं इट कॉल्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, ड्वेलिंग एंड इंडस्ट्रियल. एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, हाउ बिल्डिंग विल स्ट्रक्चर, वेयर इंडस्ट्री विल बी सेट इंस्टॉल, ये सब को हमको प्लान वे रे करिया को पड़ो. एंड तेनु इट मार्केट कोड रहबो, वाटर वर्क्स कोड रहबो, डैम्स कोड रहबो, ब्रिजेस कोड रहबो एवं रोड्स केमती रहबो, रोड एक्सपेंशन पई केते प्रोविजन रहबो, ये सब इन टाइमली एंड ऑर्डरली फैशन रे करिया पई जो व्यवस्था करा जाए ताहा को हमें अर्बन प्लानिंग बोली. सो प्लानिंग इज बोथ सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक. प्लानिंग ता खाली गोटे इकोनॉमिक कंसीडरेशन, प्लानिंग इज आल्सो हैज इट सोशल यूटिलिटी और सोशल एस्पेक्ट मध्ये रहिछि. केमती ना द सक्सेसफुल प्लानिंग टेंड्स टू मेक्स पीपल हैप्पियर. यदि प्लानिंग हम इफेक्ट करबा ताले गोटे अर्बन सिटी रे लोक माने सुख रहिबे. सो हैप्पीनेस जदि लोक माने खुशी रहिबे एवं सब प्रकार इंटरकोर्स संग सुविधा मिलिबो एवं सुविधा रे रहि परिबे ताले क्राइम कमिबो, क्रिमिनल एक्टिविटी करिबो, कंट्रोवर्सी लोकन भीतर कॉन्फ्लिक्ट कमिबो, इट विल लेस केस विल बी रजिस्टर्ड इन द पुलिस. सो ऑल दिस फैसिलिटी तेनु एटा प्लानिंग टाको गोटे सोशल सोशल एस्पेक्ट मध्ये रहिछि. एवं सामाजिक ऑर्डर रहिबो, सामाजिक क्रमटा डिवास्टेटेड होबनी. देयर विल सोशल ऑर्डर, सोशल ट्रैंक्विलिटी. इट विल रिड्यूस टेंशन. यदि हमें प्लानिंग सठिक न करबा, यदि टाउन ने देयर विल बी नो अवेलेबल स्कोप फॉर पार्क, गार्डन, ए सब न रहइबो ताले पीपल व्हाट विल डू, वेयर दे विल कपल्स विल कोड बोलिबे, पिला माने कोड बोलिबे, हाउ टू स्पेंड देयर टाइम.
ultimately it will create tension and it will create many problems. So that's why it is a social aspect. Economic aspect अछि kana less wasteful यदि planning करले करबा द्वारा हमर more effectively हमें हमर resources यूज कर परिबा एवं हमर resources less wastage हो यदि planning न करबा ताले हमर resources more waste हो और waste management मध्ये बढ़ी जीवो तेनु आमे जदि resource को waste रु बंचैले ताले एटा creation of wealth हला तेनु से दृष्टि देखिले एटा मध्ये गोटे इकोनॉमिक एस्पेक्ट तेनु प्लानिंग रो बाय प्लानिंग करबा द्वारा इट इज सेव्स आवर मनी एंड क्रिएट्स वेल्थ तेनु प्लानिंग बहुत गोटे सोशल एस्पेक्ट अछि एवं आर ए एस्पेक्ट मध्ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट मध्ये अछि सो अर्बन प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ the wide range of issues and problems of providing adequate housing, employment, school, parks, playground, good transport facilities, utilities, health services, ये सब management of housing ये सब को मतलब improve करे urban planning. Housing residential colonies को establish करिबो तार provision कोन होइबो waste management केम देबो is all these activities come under urban planning. This problem requires a constant and continuous planning instead of piecemeal planning and different level. आमे हापाजली गोटे कोन गोटे कर देले इट कंटीन्यूअस प्लानिंग दरकार करिवो ए सब दिन so if continuous planning going on then town will be so this it will cover the city or provide the better welfare services to the people. At the same time all these activities require there is no planning what happens जदि प्लानिंग न रहइबो ताहले कोन प्रॉब्लम हो देयर इज मल्टीपल प्रॉब्लम in urban cities जदि प्लानिंग न रहइबो there will be congestion, there will be traffic jam, road will be unwide, so there will be waste management could not be take place, people will react लोक मानकर प्रतिक्रिया आबो सब टाउन लोक माने टाउन ग्रो करिवो नाही in the multiple problems will be there तेनु urban planning involves all these provisions of welfare services for the people. And urban planning also cannot be seen in isolation. Rather, the problem of urban planning related to the entire region. हमें खाली urban area रो problem टाको deal कर देला हबनी, हमें total region रो problem को मध्य deal करि परिबा. So that's why it is a regional approach of planning. हमें planning तारो regional approach को नवागु पड़िबो. So that regional approach ले से region development हबो planning करिबा एवं urban planning मध्ये हबो. Both side by side there must be coordination between regional planning and urban planning. So regional and urban planning is closely related with each other. Regional planning deals with the physical planning of the town and cities and the countryside also. Countryside पाखापाखि adjacent town area रो planning केमति हबो ताको मध्ये हमें देखियो पड़िबो urban planning भितरे. So sociologist Patrick Geddes and Louis Mumford have written about regional planning and development as a prerequisite to any social planning and town planning. Regional planning टा गोटे pre-requirement बोले कहउछन कि it is a pre-requirement for town planning. Patrick Geddes और Louis Mumford कहउछन. So that's why regional planning must go hand in side by side town planning. So for this town planning, a town planners are being appointed by the municipalities. Municipality कौन करिवो ना town planners सब appointment करिवो and she should the town planner should be an expert in the area of land use planning and should utilize the minimum extent of land required for expansion of town and preserve valuable land. So minimum land use करिवो for public use एवं केमती land preserve करि परिवो एटा रहइबो town planner रो purpose. तेनु प्रत्येक municipality town municipality must appoint a town planner. That town planner सब रहिबे एवं से सब planning देबे. Urban planning is a very broad concept and it includes not only planning of street, houses, road, few civic amenities, buildings and urban. It also effective and creative. To be effective and creative, it has to be start from the village and cover the entire country. Town planning that total country के मध्य involve करिवो. तो एटा गोटे टाउन प्लानिंग के आमे आइसोलेशन देखिया दरकार नाही इन ए टोटल कंट्री रेस्पेक्ट एना अर्बन टोटल अर्बन सिटी रो रेफरेंस रे हमर रोड कंडीशन मध्य लिंकेज करिवो तेनु अर्बन प्लानिंग ता रो विकास देशर विकास सहित मध्य जड़ित
कारण जदि अर्बन प्लानिंग रो सफिशिएंट डेवलपमेंट हबनी त देशर विकास मध्य स्लो डाउन हो जिवो तेणु we should utilize the resources of the city to the best advantage of the community as well as the state as well. यदि जति की डेवलपमेंट पई हमें जो पैसा यूज करबा टाउन रो से पैसा को बेटर कंट्री साइड रो डेवलपमेंट मध्य ता द्वारा जेम ही परतो ता ऊपर नजर पकाउ पड़ो. देन अर्बन प्लानिंग टेक्स प्लेस विदिन नेशनल फ्रेमवर्क. अर्बन पॉपुलेशन जेतु इंक्रीज करूची आमे गोटे निर्दिष्ट जेमति हमर गोटे प्लानिंग हला एनआरएचयू जो बस चलला सिटी बस सो से प्लानिंग ता गोटे नेशनल फ्रेमवर्क रही छी सेटा तो गोटे केवल ओडिसा पे हेनी इट इज ऑल ओवर जे हाउ टू रिड्यूस एमिशन बाय द व्हीकल्स एसएक्स यूज यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भलो न रही बारू लोक माने पर्सनल व्हीकल्स यूज करछन अधिक परिमाण then certifying to reduce this and to provide facilities to the traffic jam hochi then to reduce this ame national framework re gote plan kara gala je eta ku city bus provide kariba so then urban planning must take place within a national framework and planning gets power through its embodiment in the legislation and regulation which forms a part of a legal aspect of the state or then eta gote framework bhitere हमको से प्लानिंग करिया पड़िबो एवं से फ्रेमवर्क भीतर करा गले ऑल सिटीज जेतु अर्बन सिटी संख्या सिटी सेंटर कथा बढ़ुची पॉपुलेशन बढ़ुची तेणु हमको गोटे नेशनल फ्रेमवर्क रे प्लानिंग करिया पड़िबो तेणु अर्बन प्लानिंग टेक्स प्लेस विदिन नेशनल फ्रेमवर्क रे भारत तेणु सेमति करबा द्वारा प्लानिंग गेन करिवो प्लानिंग मोर गेन करिवा तेणु अनदर इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग अकर्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम व्हिच अगेन डिपेंड्स ऑन द स्टेट तेणु जो प्लानिंग आम अर्बन प्लानिंग कले इम्प्लीमेंट किए कर से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर इम्प्लीमेंट कर तेणु इट रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तेणु अर्बन प्लानिंग शुड नॉट ओनली पॉलिटिकल एंड सोशियो कल्चरल फिजिबल बट शुड एनवायरमेंटली इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजी फिजिकली एंड फिजिकली फिजिबल होगा दरकार ये सब दृष्टि फिजिबल होगा दरकार अर्बन प्लानिंग एनवायरमेंटल फिजिबल हम इकोनॉमिकल फिजिबल टेक्नोलॉजिकली जैसे टेक्नोलॉजी यूज करिया कथा टेक्नोलॉजी वैषयिक ज्ञान कौशल यूज करके केमती आम कम ये करि परिबा सेति पई मध्य देबा कथा एवं फिजिकली कम पैसा रे केमती हमें प्लान करि परिबा इंफ्रास्ट्रक्चर केमती कम यूज गुरु हे परिबो ए सब को हमें दृष्टि रखी अर्बन प्लानिंग की हम परिबा ते अर्बन प्लानिंग कांसेप्ट कोड आसला हाउ द इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग अर्बन प्लानिंग यू नो human beings have been living in this earth for more than 1 million years लक्षे वर्ष पूर्व आम ये बास कर मनीष पृथ्वी बास कर किंतु आमर जो बट द हिस्ट्री ऑफ सिटीज एंड टाउन्स इज ओनली 5000 इयर्स ओल्ड मात्र 5-6000 वर्ष भितर आम सिटी सभ्यतार विकास जोटा आमर कहीपर पुराणा इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदारो हरप्पा मोहनजोदारो एंड यूफ्रेटिस वैली उपत्यकार यूफ्रेटिस नदी उपत्यकार गढ़ सभ्यता एवं नील नदी उपत्यकार सभ्यता नाइल सिविलाइजेशन ये तो 3टा पुराना सभ्यता गढ़ उठला एवं 6th सेंचुरी विषय उज्जयिनी जो सहर विकास होता तेणु ये सब को हिसाब कले 5000-6000 वर्षर इतिहास तेणु से the evolution of urban planning is only of 6000 years old. In ancient India, particularly during so ancient India during Mauryas and Gupta's period, separate urban planning and development agency existed. हमारा जो मौर्य एवं गुप्त राजा शासन काल में सेपरेट अर्बन प्लानिंग व्यवस्था थिला बोली हमारा इतिहास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अछि. The work of urban planning was performed by city council and town council. The city council by town council द्वारा एगुड़ा का संपादन करा जाता है along with the function of the state. The city council modeled upon the village panchayat. City council का हमारा village panchayat बोलिया थिला. And Gupta period, we have evidence of existence of town council and the public was also very vigilant about to proper development of the city. एवं पब्लिक पार्टिसिपेशन मध्य से समय सिटी विकास सहित होता एवं सिटी विकास संगे
पब्लिक पार्टिसिपेशन मध्ये होतला गुप्त अपराध शासन काल तेणु आमर the historical development or evolutionary development of towns is very well planned. A number of books are written by the ancient author about town planning. आम भारत रे आमे बहुत पुराना शास्त्र मध्य टाउन प्लानिंग विषय देखा पड़ो जोटा तुम जानते समस्ते ये वास्तुशास्त्र गोटे पुराना आजिकल शास्त्र नुह वास्तुशास्त्र शिल्पशास्त्र जोटा कहते शिल्पशास्त्र वास्तुशास्त्र एगुड़ाक सब इवेन कौटिल्य इन इज फेमस बुक अर्थशास्त्र से खाली जे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक पॉलिटिकल कहला नुहे अर्थशास्त्र गोटे मौलिक जिनस फंडामेंटल जिनस होची अर्थशास्त्र रे चाणक्य विलेज प्लानिंग और टाउन प्लानिंग विषय उल्लेख कर विविड डिस्क्रिप्शन अबाउट विलेज एंड टाउन प्लानिंग इन अर्थशास्त्र देयर इज ए ब्यूटीफुल रेफरेंस ऑफ विलेज एंड टाउन प्लानिंग. So there is another book named Manasara. Manasara गोटे शिल्पशास्त्र था जमी कौटिल्य अर्थशास्त्र मनसारंकर गोटे शिल्पशास्त्र था. All these traditional very ancient books, but it has a very unique value from variety of consideration. अनेक गुड़े कारण taking the material, the quality of test. Even during ancient days, the quality of soil testing was very mature. By soil testing, different method द्वारा क्या होता है? By smell, by touch, by holding it on the hand. These are the soil testing method was very developed in ancient India. Even soil, the color of the soil was also how it is tested. So these were the traditional Vastu Shastras that was provided a very rich source of knowledge of the traditional ancient people about the town planning. The soil, whose soil how much of the building will be of what height, soil testing. So that was the Shilpa Shastra, it was architecture by Manasara. Architectural design. So this shows the scientific approach to town village planning in ancient India. Shilpa Shastra, Vastu Shastra, Kautilyanकर जो reference ये सब prove करथला in ancient India our town planning was very scientific than the modern times. आमर आधुनिक समय अपेक्षा सेतेबेलर टाउन मध्य roads are well designed, very wider, residential colonies are well planned. In अर्थशास्त्र सब reference को village मध्य similarly design करा जाउतला बोली कि there is a reference in अर्थशास्त्र. In the Manasarankar Shilpashastra, सेटा गोटे great treatise on town planning and architectural design, and which consists of 75 chapters. 75 chapter reference dealing with each chapter dealing with one particular aspect of house building and town planning. So that's why there are different. There are some chapters are there which give. The fourth chapter describes investigation of the nature of different types of soil. केमती माटी टेस्ट करिवो एवं को सॉइल ले केमती घर करिवो से सब विषय रेफरेंस जादी ए मानसरंग शिल्पशास्त्र चतुर्थ अध्याय रे ए विषय वर्णना करा जायछि. सेवरल टेस्ट्स द्वारा केमती करा जाय पाइबो. The seventh chapter deals with the planning of the villages according to the suitability of the locations. All location में town village build करा जाय परो से पई सब मते करा जायछि. 11th chapter deals with the formation of the cities, towns and fortress. दुर्ग केमती करा जिवो, टाउन केमती करा जिवो, सब विषय मते को जायछि. इन विभिन्न चैप्टर describe करूछि ए सब. But however there are different types of town plans that has been mentioned in the Shilpashastra of Manasara. Taragare अनेक गुड़े types of town रही. ताको कह जायछि दंडका, सर्वाथो भद्रा, नंद्यावर्ता, पद्मका, स्वातिका, प्रस्तर टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग ये जो 8 डिजाइन है, 8 प्रकार डिजाइन है टाउन बना जायछि. So 8 types of town has been built regarding this in Shilpashastra of Manasara.
मानसरंगर शिल्प स्तर रे 8 प्रकार टाउन विषय रे रही टाउन गुड़ा ए प्लान रे गढ़ा दंडका टाइप ऑफ टाउन प्लान प्रोवाइडेड 2 मेन एंट्रांस गेट्स दंडका रे दुई प्रकार एंट्रांस गेट रहे जनरली अडॉप्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल टाउन दंडका साधारणतः छोटो टाउन पई रही है द सेकंड टाउन प्लान is that is should be fully occupied by houses of various disciplines है जोड़ा सेकंड होची हमरो सर्वथला सेटा दुई सब रेसिडेंशियल कॉलोनी पई ऑक्युपाई करा दिबो एवं टेंपल डोमिनेट द विलेज एवं सेटी टेंपल सब बेसी रहतो थर्ड टाइप ऑफ टाउन प्लानिंग दैट इज नंद्यावर्त प्लानिंग वाज मेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स एंड नॉट फॉर द विलेज एटा केवल टाउन नंद्यावर्त का केवल टाउन कंस्ट्रक्शन गठन पई जड़ित नंदावर्त इज द नेम ऑफ ए टावर नंदावर्त होची गोटे फुलर ना एवं से अनुसार एटा केवल टाउन इट इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द साइट्स आइदर सर्कुलर और स्क्वायर शेप से टाउन टा गोटे स्क्वायर साइज रहबो बा सर्कुलर रहबो ए नंदावर्त एवं द एडजॉइनिंग स्ट्रीट्स टू द टेंपल द स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू द सेंट्रल एडजॉइनिंग स्ट्रीट सेंट्रल एडजॉइनिंग स्ट्रीट इज द पैरेलल स्ट्रीट जीवो रास्ता सब जीवो एवं टेंपल सहित मध्य रिलेशन रहिबो then next is that Padmaka type of plan was practiced for building of the towns with the fortress all around चारि करे दुर्ग थिबो मझिरे टाउन थिबो सेउडा को पद्मा प्लान जाय the pattern of the plan resembles the petals of lotus radiating outwards from the center lotus जेमति रहिछि आउटवर्ड चारि कर थिबो मझिटा जेमति रेडिएट करथिबो सेही टाइप रो डिजाइन न पद्मका सेटा लोटस डिजाइन न होइछि then swastika type of plan contemplates some diagonal street dividing the site into certain triangular plots it is triangular plot guda so hoitibo evam the site need to be marked out into square or rectangle form re thibo then the prastara plan is that of the site may be either square or rectangular but not triangular or circular the sites are set apart the poor middle class and the rich and very rich it's a category करिछि ए टाउन प्लानिंग रे अति धनी धनी मध्यम क्लास मिडिल क्लास एवं पुअर पई विभिन्न कैटेगरी ऑफ एरिया सब कर दे तापर आसो कामुका कामुका प्लान ऑफ टाउनशिप is suitable for the place where the sides of the town is in the form of a bow or semicircular or a parabolic or more applied by the towns located on the area of seashore एगुडा सब समुद्र कुड़िया टाउन पई ए प्रकार कामुका प्लान ता सुटेबल जोडी की टाउन गुडा को गोटे फॉर्म ऑफ बो बा सेमी सर्कुलर आकार थिबो तापर चतुर्मुख टाइप ऑफ प्लान इज एप्लीकेबल टू ऑल टाउन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट टाउन टू द स्मॉलेस्ट विलेज छोटा विलेज रु बड़ टाउन पर्यंत सब ठई ए चतुर्मुख एप्लीकेबल द साइड्स मे बी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हैविंग फोर फेसेस और चारिटा एंट्री गेट थिबो चारिटा फेस थिबो एवं रेक्टेंगुलर बा स्क्वायर साइज थिबो तेनु after this type of Shilpashastra, then the evolution of the town planning is very prosperous during Mughal period. Mughal period रे ये जो एंकर पिला टाउन प्लानिंग दा बहुत डेवलप करथला Mughal माने the town planning very flourished, very leap and bounds in during Mughal period. Many cities like Fatehpur Sikri, Ajmer, Ujjain, Bhagpur, Banaras, Delhi, Agra, ये सब गुड़ा और अनेक एवरी they are the influence of Muslim architectural design, बा Mughal architectural design गुड़ा सब हिकरा and Ujjain जेंतो हम जानी चे Ujjain गुड़ा city of ancient India dating back to 6th century BC रा षष्ठ शताब्दी बेसी ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रु Ujjain शहरडा रही आछि जोड़ा उज्जैनीटा बर्तन जोड़ा कि मध्य प्रदेश रे गोटे शहर सेटा ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रु एठी शहर रही आछि so other in the regime of Akbar a public works department was established for the planning and development construction work planning और development पई उनका समय रे अकबर के समय रे गोटा public work department से खोलिथिले जोड़ा कि development town work रा करथला all the Muslim rulers had a separate department of urban planning and development. Muslim ruler मानंग समस्त मुस्लिम रूलर करे urban plan town development पाई गोटे स्वतंत्र डिपार्टमेंट से रखथिले
Like Romans, the Mughals too wanted to show their power and pomp by constructing monumental structure for the use of royal families at the cost of other citizens. ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୋଗଲ ଆଉ ରୋମାନ ମାନେ ଉଭୟ ଗୋଟେ monumental structure ସବୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟି ସହର ସବୁ ଗଢି ଉଠିଲା. The planning of a grid pattern with strict architectural and land use controls on the main street. Then during British phase, the main emphasis of urban planning was based on their strategic linkage to port town. କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ମୁଗଲଙ୍କ ପରେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ emphasis ହେଲା the planning was based on their strategic linkage to port town. ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ ରହିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ. ତେଣୁ ପୋର୍ଟ ସହିତ ସବୁ ଟାଉନ ଗୁଡାକୁ ସିଟି ଗୁଡାକୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଲେ, ବା ପୋର୍ଟ ସମୁଦ୍ର ପୋର୍ଟ ଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ସବୁ ସହର ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଲିଙ୍କେଜ କରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡକୁ ସେଇ port city ସହିତ. Then evolution of urban planning technique and solution initiated in the beginning of 20th century to tackle the problem of urbanization, which aimed at town improvement. तापरे town improvement बता उठला. The first urban movement improvement authority was constituted in Calcutta during 1794. प्रथम urban improvement authority was constituted 1794 रे कलकत्ता रे गठन ହେଇଥିଲା. ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ. Then Mr. H.V. Lanchater was appointed as town planning advisor to the Imperial Government of India. During British Raj, they have appointed a town planning as a town planning advisor to Government of India. Government of India को town advice करिया पाई ଗୋଟେ town planner advisor appointment कले. एवं after the independence, a fresh impetus in the front of urban planning and development took place. The Model Act prepared by the Town and Country Planning Organization got the approval of the ministry and other different plan. ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ଦୁଇଟା legislation ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା land acquisition for development and planning. ଏଟା ଗୋଟେ legislation ଆଣିଲେ ଯେ ସହରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ land acquisition, ସରକାର land acquisition ଜମି ଆହରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ creation and development of authorities to undertake large scale activities କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆକ୍ସନ କରିପାରିବେ. Then the existing urban planning legislation in force India suffer from many deficiencies. ଆମର जो urban legislation ସବୁ ଅଛି, urban ର ବିକାଶ, ତାର ସମସ୍ୟା, ତାର taxation, ଏ ସବୁ ପାଇଁ जो ସବୁ ଅଛି legal system, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଯୋଉଟା କରେକ୍ସନ ହେଇପାରିଲେ urban planning ଟା urban ର development ଟା quicker ହେଇପାରିବ. ଏକରେ ହେଉଛି overlapping of functions and jurisdictions in the absence of suitable provision for the coordination of the activities. हमें coordination होनी, गोटे municipal area स्टेट गवर्नमेंट काम करिवो, जिला प्रशासन काम करिवो, म्युनिसिपालिटी काम करिवो, राज्य सरकार काम करिवो, केंद्र सरकार काम करिवो, किंतु एंका भितर कोऑर्डिनेशन होनी, बेला बेला सेटा ओवरलैपिंग कर, सेटा मध्ये गोटे बड़ प्रॉब्लम. The municipality of legal and judicial structure organization exists without establishing a proper linkage among them. Municipality रो जो रहला legal और judicial structure ता भितर गोटे proper coordination मध्ये अभाव रहउछि. तापर emphasis on plan preparation not implementation and execution. हमर प्लानिंग सब अछि, हमर सीडीए बीडीए बहुत संस्था अछि, तांका पे बहुत संस्था अछि, बहुत खर्च होछि, तांकर प्लान सब पेपर वर्क सब बहुत होछि, किंतु इंप्लीमेंटेशन जो रहै प्लान जो रहउछि किंतु इंप्लीमेंटेशन बडकू सब किछ नै. दैट इज इंप्लीमेंट पोर इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन. जदि भी इंप्लीमेंट होछि तार कार्यकारी ठीक से करै परन की कार्यकारी करै. देन emphasis on plan preparation for the implementation is zero. Then inadequacy of effective and land acquisition provision. जमी आहरण रो इफेक्टिव जर किछि नै एवं हाउस बिल्डिंग रो प्लान रो जो रहउछि ताकु मध्ये के मानु नै. दैट इज नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड. Then lack of provision for organizational setup for plan implementation. Plan implement करिया पे जो organizational setup दरकार सेटा मध्ये तार डिफेक्टिव अछि. आ सबुठी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम रहउछि ए जे रो जे
people participation, public participation हमरो नहीं. तो town planning रे बा administration रे people participation रौनी जो दिपाई there are number of problems in towns are crop up होची. So ये सब को करी पाले there are certain improvement can be happen. So then different plan period रे there are certain main concerns for urban planning. Urban planning ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡେ concern ଅଛି. ତେଣୁ ସେ concern को ଗୋଟେ rational pattern of land use suggest କରିବା, having a economic base of the city, ଗୋଟେ city ର economic base को देखि यार ଗୋଟେ rational pattern of land use को develop କରିବା, एटा ଗୋଟେ point होइछि. सेटा ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ concern. Then to improve the level of living and condition of human environment in case of lower income group, सेटा ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ concern. सहर रे जो माने कम आयकारी लोक अछंती तांका पई उचित घर ଗୋଟେ मानवीय परिवेश प्रदान करबा सेटा ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ प्रकार प्रॉब्लम अछि. To rationalize the distribution of goods and services to the people at their doorstep is also still a problem. सेटा ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ concern of the municipal administration होइछि. And then what are the sizes of town and cities which would be most advantageous from the economic and social? टाउन नो साइज कोन होवा दरकार, केते पॉपुलेशन अकोमोडेट करिया दरकार, ए विषय किछि सेमति किछि स्थिर नै जोडा कि मतलब मोडे हम पई कंसर्न. Pursue the ratio of rural and urban population to release the pressure on rural land and maintain the economic and social balance on this. तेनु हमर रूरल अर्बन रेशियो टा केते होवा दरकार से विषय किछि पर्यंत प्रतिहिनी ए सब को गोटे एटा मध्ये गोटे हमसो कंसर्न. To observe urban labor supply with increased income of the urban poor in the wake of stagnant economy. तेणु observe urban labor supply, urban को periphery adjacent rural area जो huge migration होची, migration of rural labor migration होची, सेटा को केमती observe करबो ता एटा मध्ये गोटे बडा कंसर्न. हाउ टू observe them बा आसिकरी सेमाने बस्ती करी कि दउछ. So सेटा मध्ये गोटे प्रॉब्लम होची, कंसर्न ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड slum मैनेजमेंट मध्ये गोटे कंसर्न. सो ए सब कंसर्न को मीट करिया पई नेशनल प्लान सिंस द फर्स्ट इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट प्लान पीरियड रो विभिन्न स्टेप निया जाउछि. तेनो प्रथम प्लान गिव स्ट्रेशन, द फर्स्ट प्लान गिव स्ट्रेशन ए रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज बाय ऑगमेंटिंग द स्टॉक ऑफ हाउसिंग सप्लाई. तेनो रेफ्यूजी मानकर रिसेटलमेंट पई प्रथम प्लान ता ऊपर गुरुत्व देला. So second 5-year plan हमरा गुरुत्व देला the method of securing plan development urban area जो डेवलपमेंट होता प्लान डेवलपमेंट करबा एवं एक्सपेंशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज एवं घर सुजोग केमति सब लोक पाइबे सेति पय गुरुत्व देला. आ डेवलपमेंट ऑफ सिविक कम्युनिटीज ए तीनटा पॉइंट ऊपर सेकंड प्लान गुरुत्व देला. द थर्ड प्लान गुरुत्व देला the preparation for the 7th master plan for practically all the major cities. एटा पास करिटा ଗୋଟେ master plan कला, control of owner land values, physical planning of the land use ये सब ऊपर पास करिटा master plan योजना कला. Then fourth plan ଗୋଟେ national urban land policy frame କରିବା ऊपर गुरुत्व देला. fourth 5-year plan हमरो to meet the concerns of the urban planning ए ଗୋଟେ national urban land policy गोटा फ्रेम करिया ऊपर गुरुत्व देला. एवं urban water supply and sanitation, land acquisition and development एवं preparation of master plan of selected towns ऊपर ए fourth plan बेसी गुरुत्व देला. Then fifth plan which was started in 1974 and continued till 1979 से मतलब गुरुत्व देला कतटा ए ऊपर हमरो that slogan removal of poverty and attainment of self-reliance. That was the call of the fifth plan. Removal of urban poverty and the attainment of self-reliance. Increase of civic services in urban center, efforts to tackle urban problems in metropolitan cities, to promote development of smaller towns, small town of vikas kintu it assists in the implementation of project of national importance. जो national importance project होइला project of national importance ताको एगुडा सब
तापर सिक्स्थ प्लान जोटा 78 रु 23 जगह हला इट गिव्स मोर एम्फासिस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अर्बन रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को समाधान करबा उपरे सिक्स्थ प्लान विशेष गुरुत्व देला so these different fiber plans has give stress to meet the different concern of the urban administration these different plans give stress on these different aspects so that urban development would be possible. So another in urban society, urbanization of people is meaningless without urbanization of space. It is the one thing. But you know, urbanization of people is meaningless without urbanization of space. जदि आम अर्बान स्पेस अर्बानाइज करि पारने सेमति हापाजड होले गाडी आबडा खबडा हापाजड होले टाउन ग्रोथ होची स्पेस रो जदि अर्बानाइजेशन होनी त लोकंगर अर्बानाइजेशन माने किछि नै तेनु वी मस्ट अर्बानाइज द स्पेस so सेति पई डिफरेंट स्टेप्स मस्ट हैव टू टेकन बाय द local administration and under the traditional approach of urban planning there was the concept of master plan. But master plan concept stress since the master plans are basically land use plans master plan land use plan को बुझाए their subject and object interest was development of use of space जब space रा use हबा तार development हबा ए ऊपर गुरुत्व दिए तेनु ए सब को हमें देखि परले टाउन रो डेवलपमेंट better ही पाइबो. Then certain new approach to urban planning how कोन नुवा approach हमें urban planning. The traditional approach to master plan have many limitations which can be overcome and can be geared up for development only. तार केतक लिमिटेशन हमको नुवा प्लान करिया पड़िबो कोन करिया पड़िबो ना तार ए स्कोप टकू वाइडर सिटी रीजन थरु आउट के वाइडर करिवा. Elaboration of master plan for land use is to be effected within the context of regional development plan. It focus on policy statement rather than map the relationship. Then its process provide a different mix of regulations. विभिन्न प्रकार रेगुलेशन करिवो विभिन्न लोकल रीजनल और नेशनल ऊपर रेगुलेशन करिवो ए जो करि परले हमें ए न्यू अप्रोच माध्यम रे जो मास्टर प्लान लैंड अछि सेटा आउट के इफेक्टिव हे परिवो एवं लोकन को पर्पस सॉल्व करिवो एवं अनेक अर्बन प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो. देन व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी. देन जे तुम कहि दिली हमर प्लान गुडी को गुडे प्लान देला कि फोर प्लान दे नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी गुडे प्लान करिया पई गुड देला तेनु तार मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल कोन and to promote the welfare of the society general and urban area in particular माने साधारण समाज एवं स्पेसिफिकली अर्बन सोसाइटी रो विकास पई हमकु गोटे नेशनल अर्बनाइजेशन प्लान फॉर्मुलेशन करिया को पड़िबो एवं सेति पई तार पर्पस रहइबो तार अनेक ऑब्जेक्टिव अछि ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी favor a pattern of urbanization and economic development educating the private and social cost of urban development convergence of inter-regional income and growth differential ए सब ऑब्जेक्टिव को हासिल करिया पई हमरो ए नेशनल अर्बनाइजेशन प्लानिंग करा जिवो एंड द एंटायर अर्बन कम्युनिटी शुड बी टेक पार्ट इन अर्बन प्लानिंग एवं समस्त अर्बन कम्युनिटी रो लोक ता सब सिटी कम्युनिटी केमति अर्बन प्लानिंग रे पार्टिसिपेट करिवे सेटा मध्ये हमरो मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी रो. So this then media and governance so urban governance रो अनेक समस्या को समाधान करिया पई रोल ऑफ mass media is promoting a good governance in the urban area. अर्बन गवर्नेंस को आउट के रिवाइटलाइज करिया पई हेले हमको मास मीडिया रो गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि. So in the recent years urban areas specifically the cities are enhancing the standard to compete the global market to attract investment. जेहेतु हमें ग्लोबल मार्केट रे हमर टाउन को शो करिया चाहू सेति पई हमको कम्पीट करिया को पड़िबो. ग्लोबल मार्केट जने इन्वेस्टर आसीबो जे शहर रो स्थिति भलो नाही ताले के इन्वेस्टर आसीबे नै शहर इन्वेस्ट करिया पई तो सेति पई वी हैव टू प्ले आवर रोल in this the media mass media have a greater role to play to revitalize to reactivate the governance town governance and one of the resultant change in the transformation
is the organization of labor process and a shift from manufacturing economy to service economy. आमे हम टाउन टाको जदि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी रो हमें सर्विस इकोनॉमी के ट्रांसफर करबा ताले अर्बन गवर्नेंस माने हम अर्बन रो डेवलपमेंट आउट के त्वरान्वित हो पाइबो तो सेति पई हमको ए सब केतरा स्टेप नेबो पड़े मीडिया गवर्नेंस most cities are lacking the basic infrastructure urban ability service utility services and governance mechanism ए सब अभाव रही छी तेणु एको पूर्ण करा पई mass media helps in bringing attention to the plight of the poor गरीब लोकंकर urban रे बास्कोत्रा urban poor लोकन प्रति attention सृष्टि करिवारे मीडिया रा mass media गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही छी media also serves as an connective between the urban poor and the government urban poor और government भितरे गोटे कनेक्टिव भलिया काम करिवो के media so changes in media system have threatened the bonds between the media people and government तेणु media people और government भितरे जो relation better होई परलो ताले इटा better but nowadays we are seeing that the present modern media are also follow a logic of inclusion and exclusion of communities केतेक कम्युनिटी के समान इंक्लूड करछन्ती केतेक कम्युनिटी के पीपल हु आर कमर्शियली वायबल ए माने सेही कम्युनिटी के बेसी एक्सपोज करछन्ती जो माने कमर्शियली वायबल एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड क्लाइंट्स ऑफ मीडिया तेणु फॉर ए बेटर गवर्नेंस देयर इज ए नीड फॉर डेवलपिंग ए कॉम्प्लेक्स मेकानिज्म एंड मीडिया इंस्टीट्यूशन थ्रू व्हिच पुअर सिटीजन एंड ग्रुप कैन आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट एंड मीडिएट देयर डिफरेंसेस एंड कैन मीडिएट देयर व्यू थ्रू द मीडिया तेणु सेटू करि परले हमरो बेटर हे परिबो The relationship between mass media and society are inextricably interlinked. Mass media and urban society is very closely interlinked. Mass media helps in empowering people as well as creating awareness regarding the age-old oppression, rights of the citizen, and the need of freedom of speech and expression. ये सब को आमे हासिल कर परिबा through this media coverage. तेणु media रा गोटे close relation अछि. There is a better so this freedom is crucial to human creativity ए freedom न रहले creativity बा सृजनशीलता कमी जिवो तेणु media ही prosper करि परिबो creativity by giving freedom to people the mass media has an important role to play in generating both trust and distrust in citizen upon governing institution गोटे governing institution नै मे भी municipality मे भी state government तार trust create लोक मान के भीतर trust create करिबा एवं distrust create करिवारे media भूमिका गुरुत्वपूर्ण media can also expose nepotism corruption in high offices in metropolitan administration in municipal administration ए जो nepotism चलती favoritism चलती ताकू मते expose करिवारे mass media रा भूमिका मते बहुत रही तेणु ए सब को जदी तापर partisan media some medias are following supporting a particular party तेणु partisan media को मते हम चेक करि परले हमरो media house society relation better there is a need to create a democratic public and influence the public institution to be responsive to people but a public institution गुडाक responsive of people सरकार हो अबा जे कोन से public institution हो से माने केमती responsive हेबे सेटा होची mass media रा काम mass media से मान को responsive करिवारे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका सृष्टि करिवो this mass media can play a very sustained human relationship play very important role in sustaining human relationship in urban atmosphere रे गोटे human relationship केमती sustain करा जाय परिबो এবং human relationship करी better ए करि परिबो सेटा को सहायता करिवो mass media without effective channels of communication among the members of a community no system of governance can exist no system of governance can exist or can become effective unless and until there is a effective channel of communication among the members of a urban society यदि गोटे urban administration पाखरे कोनसी effective channels of communication नहीं then mass media will provide this channel to the people
ताले आमे सेटा better हे परिबो, that is a better relations. So media in contemporary urban governance, there are a number of media has been in contemporary urban governance. Vartaman sampratika governance re in context, the media plays an important role in the exertion of power and distribution of values. Media affects the overall quality of public life and also shapes people engagement in the specific policy. तेणु मीडिया टा गोटे बर्तमान गुरुत्वपूर्ण रिसेंट पेज रे मीडिया गवर्नेंस इज वेरी अर्बन गवर्नेंस रे मीडिया प्लेज ए वेरी इंपोर्टेंट रोल. आमे मीडिया टा को आमे अर्बन गवर्नेंस रे आमे तीन भाग विभक्त कर परिया. गोटा होची मेनली ऑफिशियली ओन्ड मीडिया and the beneficiary of government patronage paruthwa media evam conformist and agode neutral media. एमती तीनटा कैटेगरी ऑफ मीडिया रे अर्बन गवर्नेंस रही जो माने विभिन्न प्रकार एडवर्टाइजमेंट पाउछनी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से माने रियल प्रॉब्लम को सब एक्सपोजर करिवे नाही. तेनु सेति पई हमको नेसेसरी स्टेप्स शुड बी पीपल शुड बी कॉशियस अबाउट दिस एस्पेक्ट. Roles and responsibility of media. So media in a modern public life रे media रा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि. एकरे media can create consciousness among the people. Second, media can expose all kinds of corruption, nepotism that is going on in administration. Third, media can ventilate the needs of or voices of the poor. Media can express the poor services provided by the municipal administration to the people. Media can express about the problems, that is different urban problems or different health sanitation problems that is found in different areas or in the town. Town विभिन्न एरिया रे जो सब प्रॉब्लम रहउची ताकू एक्सपोज करिवारे मध्ये एटा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवो. और मीडिया कैन एस्टैब्लिश कैन एक्ट एज ए लिंकेज between the people, the governance and the government, the administration, implementing agencies and the government. एंका भितर गोटे लिंकेज हिसाब रे मीडिया कार्य करि परिबो. Another point होची the media can also ventilate the grievances of the people. लोकमानकर grievances का दावी ये सब को ventilate कर परिबो. The media can expose the poverty or people who are marginalized people, expose the marginalized people, needs and necessities of marginalized people, excluded categories of people. And media can also expose the problems of the physically challenged, mentally retarded and the divided people. ये सब काम को मीडिया एक्सपोज द्वारा तार एक्सपोज कर परिबो एवं तार रोल प्ले कर परिबो. It can discover the ways of think about themselves, how to participate in governance, people's participation in governance को एटा गोटे encourage कर परिबो. How to people will participate in governance, people participation करिबारे केमति मीडिया गवर्नेंस रे पार्टिसिपेट करिवे ताको मध्ये मीडिया प्रमोट कर परिबो. मीडिया हाउ माने क्रिएट कॉन्शियसनेस और एजुकेट पीपल अबाउट द पब्लिक administration or municipal administration. All these are the roles. Then media can also expose the criminal negligence by the administration or the police administration. Criminal negligence. And media can also report various poverty, hunger, ये सब that is existing in municipal areas. Municipal जो भी सब ये सब poverty, hunger exist करथुवा ताको
Media can also play an important role in election, promoting democratic decentralization of power. Media माध्यमामध्ये गुरुत्वपूर्ण भूमिका म्हणून civil society organization. How civil society organization will participate in the administration. The administration करी administration टाको बेसी people responsive, people friendly करी करी वो सेक्टर मध्य media रे गुटे गुरुत्वपूर्ण. To make the administration more people friendly, media, mass media has a greater role to play. So these are the roles that is and responsibility of the mass media in an urban administration. Then with this we finish the block 5, blocks 8. So any question, any doubts, any misunderstandings, if any, please ask. Sangram. Any question? Any questions, students? So thank you very much, sir. I mean, I'm really thankful to you. I mean, this COVID-19, everybody is locked down in the home. You are taking so much of, I mean, giving time to us also. And out of your busy schedule, I mean, you had given some time to IGNOU. I'm really thankful to you. I mean, learners might be will enjoy the class. I mean, now your MSOE 4 and second year entire course is covered. So I hope in future also you will organize same kind of thing. Thank you very much, sir, for your giving time to IGNOU, sir. Thank you for giving me a chance Sir? for the taking of class and then interact with the students. Sir. Thank you. I'm grateful to you, sir. I'm also thankful So to the learners. I thank you very much on behalf of our regional director, on behalf of IGNOU. So you all IGNOU fraternity. So thank you very much, Jena, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Namaskar.